하나님은 파키스탄의 여러분을 사랑하시며 축복하길 원하십니다. खुदा आपसे मोहब्बत करता है और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। 예배 시간에 목사의 말이 아니요 하나님의 말씀으로 받아들이는 축복이 임하기를 바랍니다. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इबादत के दौरान पास्टर के अल्फाज नहीं बल्कि खुदा के अल्फाज को कबूल करने से बरकत पाएंगे। आमीन। 아멘. 바이블 예레미야 32장 17절을 읽어주세요. यर्मिया की किताब 32 बाब 27 आयत। यर्मिया की किताब 32 बाब 27 आयत। 27 आयत। 17 और चिताकत का निजाम शुला होगा और चिताकत का फल अब्दुल आराम का इत्मीनान होगा। आमीन। 아멘. 전지전능하신 하나님의 뜻입니다. ये खुदा की मर्जी है। 전지란 하나님께서 모든 것을 하시며 전능이란 하나님께서 모든 것을 할 수 있다는 의미입니다. तमाम इल्म का मतलब ये है कि खुदा सब कुछ जानता है, कि खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। 바이블 마태복음 19장 26절을 읽어주세요. मत्ती की अंजील 19 बाब 26 आयत। मत्ती की अंजील 19 बाब 26 आयत। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमी खुद से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। 아멘 아멘. 우리는 성경을 통해 하나님께서 얼마나 놀라운 능력과 지혜로운 온 우주를 다스리는지를 배울 수 있습니다. बाइबल के ज़रिए हम सीख सकते हैं कि खुदा किस तरह पूरी कायनात पर हैरान कुन ताकत और हिकमत के साथ हुकूमत करता है। आमीन। 아멘. 전지전능하신 하나님은 모든 것을 다 아십니다. कादर मुतलिक खुदा सब कुछ जानता है। 바이블 시편 139편 1절부터 4절을 읽어주세요. ज़बूर 139 सर होने को नहीं कटिया जाना, मेरा अपने हवाला पढ़ना है ना। 1 से 4 आयत। ऐ खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरे ख्वाबगार की छानबीन करता है और मेरी सब रोशनियों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर न जानता हो। आमीन। 아멘. 하나님께서 우리의 모든 것을 하시고 돌보신다는 사실을 기억하며 언제 어디서나 하나님의 임재 안에서 살아가는 삶을 사시길 축복합니다. याद रखें कि खुदा हमारे बारे में सब कुछ जानता है और इसकी परवाह करता है। हम आपको किसी भी वक्त कहीं भी खुदा की मदद में ज़िंदगी गुजारने की बरकत देती हूँ। आमीन। 아멘. 하나님은 우리의 생각과 마음, 미래까지도 다 아십니다. 우리는 하나님 앞에서 숨길 것이 없으며 하나님께서 우리의 삶을 완벽하게 인도하십니다. खुदा हमारे ख्यालात, हमारे दिल और यहाँ तक कि हमारे मुस्तकबिल को भी जानता है। हमारे पास खुदा से छुपाने के लिए कुछ नहीं है और खुदा हमारी ज़िंदगियों की मुकम्मल रहनुमाई करता है। आमीन। 아멘. 전지전능하신 하나님은 모든 것을 행할 수 있습니다. कादर मुतलिक खुदा हर चीज़ पर कादिर है। आमीन। 아멘. 바이블 마태복음 19장 26절을 읽어주세요. मत्ती की अंजील 19 बाब 26 आयत। मत्ती की अंजील 19 बाब 26 आयत। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। 아멘. 사람에게 불가능한 일도 하나님께는 가능합니다. जो चीज़ लोगों के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। आमीन।
하나님께서는 창조주이시며 모든 것을 주관하시고 역사하십니다. खुदा खालिक है, हर चीज पर कंट्रोल और काम करता है। आमीन। 아멘. 전능하신 하나님의 역사입니다. ये कादर मुतलिक खुदा का काम है। 성경에는 하나님의 전능하심을 보여주는 수많은 사건들이 있습니다. बाइबल में बेशुमार वाक़यात हैं जो खुदा के कुदरत को जाहिर करते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 1장 1절을 읽어주세요. पैदाइश 1:1 खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। आमीन। 아멘. 창조의 역사는 하나님은 모든 것의 시작이라는 것입니다. इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। आमीन। 아멘. 왜냐하면 전지전능하신 하나님은 창조주이시기 때문입니다. तख्लीक की खुदा हर चीज़ का आगाज़ है। 성경은 하나님께서 태초에 온 우주를 창조하셨다고 선언합니다. बाइबल ऐलान करती है कि खुदा ने पूरी कायनात को इब्तिदा में बनाया। आमीन। 아멘. 하나님은 무의 소유를 창조하시는 분으로 어떤 것도 없던 상태에서 말씀과 하늘과 땅, 우주를 창조하셨습니다. खुदा वो है जो किसी चीज़ को बगैर किसी चीज़ से पैदा करता है, ऐसे हालात से जहाँ कुछ भी नहीं था। इसने अपने कलाम से आसमान और ज़मीन और कायनात को तख्लीक किया। आमीन। 아멘. 과학도 빅뱅 이론을 통해서 우주의 시작을 인정하지만 그 시작의 원인을 설명할 수 없습니다. साइंस भी इस कायनात के आगाज़ को तस्लीम करती है, लेकिन इस आगाज़ की वजह से नहीं जानती, इस आगाज़ की वजह नहीं जानती। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। 아멘. 그러나 성경은 하나님께서 우주의 원인이심을 분명히 가르치십니다. ताहम बाइबल वाहिद तौर पर सिखाती है कि खुदा कायनात का सबब है। आमीन। 아멘. 바이블 시편 33편 6절을 읽어주세요. ज़बूर 33:6 आयत। ज़बूर 33:6 आयत। आसमान खुदावंद का कलाम थे और उसका चारा लक्षण उसके मुंह के गम से बना। आमीन। 아멘. 전지전능하신 창조주 하나님의 목적입니다. ये खुदा कादर मुतलिक खालिक का मकसद है। आमीन। 아멘. 하나님은 무작위로 세상을 창조한 것이 아니라 질서와 목적을 가지고 창조하셨습니다. खुदा ने दुनिया को तखरीकी तौर पर नहीं बनाया, बल्कि तरतीब और मकसद के साथ बनाया है। आमीन। 아멘. 인간도 하나님의 형상대로 창조하셨으며 하나님과 교제하며 그분을 영화롭게 하기 위해 창조되었습니다. इंसानों को खुदा की सूरत में पैदा किया गया था और खुदा के साथ रफाकत और इसकी तशबीह के लिए पैदा किया गया था। आमीन। 아멘. 우리의 삶은 우연이 아니라 창조주 하나님의 계획 속에 있습니다. हमारी ज़िंदगी एक अफसोस नहीं है, लेकिन खुदा के खालिक के मंसूबे में है। आमीन। 아멘. 우리는 창조주 하나님을 경외하며 그분의 뜻을 따라 살아야 합니다. हमें खुदा से डरना चाहिए और उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आमीन। 아멘. 구원의 역사입니다. 전지전능하신 하나님은 길을 내시는 분이십니다. नजात की तरीक कादर मुतलिक खुदा ही रास्ता बनाता है। आमीन। 바이블 출애굽기 14장 21절을 읽어주세요. खरूज 14:21 आयत। और सदूम के बादशाह ने इब्राहिम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दो और माल अपने लिए रख ले। आमीन। 아멘. 이스라엘이 처한 절망적인 상황입니다. इसराइल मायूस कुन सूरत हाल से दो चार है। 출애굽하 खरूज 14:21 आयत। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात को भरपूर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क में बना दिया और पानी दो हिस्से हो गया। आमीन। 아멘.
출애굽한 이스라엘 백성들 앞에 홍해, 뒤에는 애국 군대를 둘러싸여 절망적인 상황에 놓였습니다. मिस्र से निकलने वाले बनी इसराइल इंतहाई मायूसी की हालत में थे। आगे बहरे कुलजम और पीछे फौज थी। 인간의 힘으로는 해결할 방법이 없었지만 하나님은 길이 없는 곳에 길을 내시는 분이십니다. इंसानी ताकत से इसे हल करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन खुदा वो है जो रास्ता बनाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। आमीन। 아멘. 바이블 이사야 43장 16절을 읽겠습니다. जिसाया 44 बाब 16 आयत। जिसाया 44 बाब 16 आयत। आराम से निकालना पहले भी एक तो वाला पढ़ दो। 14 बाब 16 आयत। उसका एक टुकड़ा 14 लेकर बाब 16 आए। यशाया 14 बाब 16 आए। 44 बाब 44 बाब जी। हाँ ठीक है, पढ़ो। उसका एक टुकड़ा लेकर आग में जलाता है और उसी के एक टुकड़े पर गोश्त कबाब करके खाता और शेर होता है। फिर वो टांग पता और कहता है मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। आमीन। 아멘. 전지전능하신 하나님의 기적적인 역사입니다. ये खुदा मौजूदाती काम करता है। 모세가 하나님의 명령에 따라 손을 내밀었을 때 하나님께서 큰 동풍을 사용하여 홍해를 갈라 마른 땅을 드러내셨습니다. जब मूसा ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपना हाथ बढ़ाया तो खुदा ने बहरे कुलजम को तकसीम करने और खुश्क ज़मीन को बेनकाब करने के लिए एक तेज मशरकी हवा इस्तेमाल की। आमीन। 아멘. 이스라엘 백성은 믿음으로 그 길을 건넜고 애국 군대는 물에 빠져 멸망하였습니다. बनी इसराइल ने ईमान के साथ सड़क पार की और मिस्री फौज उसमें गर्क हो गई। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 11장 29절을 읽겠습니다. इब्रानियों 11 बाब 29 आयत। इब्रानियों 11 बाब हाँ जी। क्योंकि वो समझा कि खुदा मर्दों में से जलाने पर भी कादिर है, चुनाचे उन्हीं में से तमकीद के तौर पर वो उसे फिर मिला। आमीन। 아멘. 전지전능하신 하나님은 구원의 길을 여시는 분이십니다. कादर मुतलिक खुदा वो है जो निजात का रास्ता खोलता है। आमीन। 아멘. 하나님은 홍해를 가르셔서 이스라엘 구원하셨듯이 예수 그리스도를 통해 죄의 종이었던 우리를 구원하셨습니다. जिस तरह खुदा ने बहरे कुलजम को अलग करके इसराइल को बचाया, उसने हमें यीशु मसीह के जरिए गुनाहों की गुलाम बनने से बचाया है। आमीन। 예수님은 길이요 진리요 생명이 되셔서 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길을 열어 주셨습니다. यीशु रास्ता है सच्ची जिंदगी बन गया जो हमारे लिए खुदा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता खोलता है। आमीन। 우리 삶에도 홍해 같은 문제가 있을 때 하나님을 신뢰하고 믿음으로 나아가야 합니다. जब हमारी जिंदगियों में बहरे कुलजम जैसे मसले होते हैं तो हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए, ईमान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। 아멘. 불가능해 보이는 상황 속에서도 하나님을 신뢰하며 하나님은 길을 여십니다. अगर आपके लिए हर काम हालात में भी अगर आप हर नामुमकिन हालात में भी खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा एक रास्ता खोल देगा। आमीन। 아멘. 생명의 역사 전지전능하신 하나님은 죽음에서도 생명을 건져주시는 분이십니다. जिंदगी की तारीख खुदाए कादरे मुतलिक खुदा वो है जो मौत से जिंदगी बख्शता है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 11장 43절부터 44절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील 11 बाब 44 आयत। यूहन्ना की अंजील 11 बाब जो मर गया था वो कफन के हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था।
यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। आमीन। 나사로의 죽음과 가족들의 절망입니다. लाजर की मौत और उसके खानदान की मायूसी। 나사로는 죽은 지 나흘이나 되어 시신에서 냄새가 나는 상태였습니다. लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और उसके जिस्म से बदबू आ रही थी। 마르다와 마리아는 절망하여 주님 너무 늦었습니다. 냄새가 납니다. मरियम और मार्था मायूसी में थे और कहा, खुदावन बहुत देर हो चुकी है। 그러나 예수님께서는 늦음도 불가능도 없습니다. लेकिन यीशु के लिए ये ना देर है और ना ही नामुमकिन है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 11장 25절을 읽어주세요. यूहन्ना 11 बाब 25 आयत। यूहन्ना 11 बाब 25 आयत। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। 아멘. 예수님의 전능하신 명령이십니다. ये खुदा का हुक्म है। 예수님께서는 무덤에서 나사로야 나와라 외칩니다. यीशु ने कब्र के सामने पुकारा, लाजर बाहर आ गया। आमीन। 아멘. 죽음의 권세 아래 있던 나사로가 예수님 말씀에 순종하여 살아났습니다. लाजर जो मौत की ताकत में था, यीशु के अल्फाज पर अमल किया और दोबारा जिंदा हो गया। आमीन। 예수님의 말씀에는 생명을 창조하는 능력이 있습니다. यीशु के अल्फाज जिंदगी पैदा करने की ताकत रखते हैं। आमीन। 바이블 히브리서 4장 12절을 읽겠습니다. इब्रानियों 4 बाब 12 आयत। इब्रानियों 4 बाब 12 आयत। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुहज्जत और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बचपन और गुर्दे को खुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। आमीन। 아멘. 영적 죽음에서 생명을 주시는 예수님이십니다. यीशु रूहानी मौत से जिंदगी देता है। 나사로의 부활은 예수님께서 우리에게 영생을 주시는 예표입니다. लाजर का जी उठना यीशु की एक किस्म है जो हमें अब्दी जिंदगी देती है। आमीन। 인간은 죄로 인해 영적으로 죽어 있지만 예수를 믿는 자는 새 생명을 얻습니다. इंसान रूहानी तौर पर गुनाह की वजह से मर चुका है, लेकिन जो लोग यीशु पर ईमान लाते हैं वो नई जिंदगी पाते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 에베소서 2장 5절을 읽어주세요. इफ्सियों 2 बाब 5 आयत। इफ्सियों 2 बाब 5 आयत। जब खजूरों की सूरत के मुद्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। आमीन। 아멘. 여러분 절망적인 상황에서도 예수님 말씀을 믿으면 소망이 있습니다. हर कोई यहाँ तक के मायूसकुन हालात में भी उम्मीद है अगर आप यीशु के अल्फाज पर यकीन रखते हैं। 예수님은 우리의 영혼을 살리시는 구원자이십니다. यीशु निजात दहिंदा है जो हमारी जानों को बचाता है। 전능하신 하나님의 역사를 믿고 의지하기를 축복합니다. मैं आपको खुदा के काम पर यकीन और भरोसा करने की बरकत देती हूँ। आमीन। 아멘. 생명의 하나님은 죽음을 이기고 영원한 생명을 주십니다. जिंदगी का खुदा मौत पर गालिब आता है और हमेशा की जिंदगी देता है। आमीन। 아멘. 바이블 예레미야 32장 27절을 읽어주세요. यर्मिया 32 बाब 27 आयत। यर्मिया 32 बाब 27 आयत। सताईस आयत 27। देख मैं खुदावन तमामशत का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम बार है? 아멘 아멘. 전지전능하신 창조의 하나님은 모든 것의 시작이며 우리 삶의 주권자이십니다. तखलीक का खुदा कादर मुतलिक खुदा हर चीज़ का आगाज़ है
और हमारी जिंदगियों का हाकिम है। आमीन। 아멘. 전지전능하신 구원의 하나님은 길이 없는 곳에 길을 내시며 우리를 인도하십니다. नजात का कादर मुतलक खुदा वो एक रास्ता बनाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं है और हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। 아멘. 전지전능하신 구원의 하나님은 길이 없는 곳에 길을 내시며 우리를 인도하십니다. जिंदगी का नजात का कादर मुतलक खुदा वो एक रास्ता बनाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं है और हमारी रहनुमाई करता है। 아멘. 전지전능 생명의 하나님은 죽음을 이기고 영원한 생명을 주십니다. जिंदगी का कादर मुतलक खुदा मौत पर गालिब आता है और हमेशा की जिंदगी देता है। आमीन। 전지전능하신 하나님을 믿고 창조와 구원과 생명의 능력으로 의지하여 살아기를 축복합니다. मैं आपको अमन के खुदा से मिलने की बरकत देती हूँ क्योंकि आप खुदा पर यकीन रखते हैं और तख्लीक, नजात और ज़िंदगी की ताकत पर भरोसा करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। आमीन। 아멘. 할렐루야. 가브레스 하나님이 딸을 축복하여 주옵소서. 하나님께 주신 달란트를 잘 활용하여 하나님 나라의 귀한 일을 감당할 수 있도록 여정을 축복하여 주시옵소서. 원수박에 틈차지 않도록 하나님 도와주시고 마가복음 16장 16절부터 19절 말씀이 아버지 표대가 되게 주님 도와주시고 자기의 달란트가 그곳에 있는 것을 알고 하나님 나라를 향해 달려갈 수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주시옵소서. 아버지 어떠한 독을 마실지라 해를 받지 아니하며 병든 자에게 손으로 낫는 역사가 이 딸을 통하여 이루어지는 아버지 축복의 통로가 되게 주여 도와주옵소서. 그렇게 도와줄 주님께 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 주여 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 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 오 할렐루야 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 오 할렐루야 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 아이트가 업그레이드 될지어다. 할렐루야 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 오 주여 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 예스갈라우 예스갈라우 라카테 주님께 하나님이 가정을 축복하여 주옵소서. 아버지 주님의 뜻 가운데 하나님의 공동체들이 하나님 나라의 영광을 드러낼 수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주옵소서. 오 할렐루야 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 오 할렐루야 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 아버지 기도하지 않도록 하나님 도와주시옵소서. 아버지 하나님을 내사라라 아버지 열라라라라 기사라라라 아버지 열방의 어머니를 서주시고 어려운 무엇을 기도로 이겨나가게 하시에 감사드립니다. 하나님 도와주시고 붙잡아주시고 인도하여 주옵소서. 오 예수로 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 아버지 축복하여 주시옵소서. 강건함을 허락하여 주옵소서. 많은 사람을 섬기는 귀한 이 섬기를 주어 도와주시고 아버지 파스터도 파스터지를 아버지 섬기는 투박 주께서 하심의 선한 길로 일하는 길을 건강을 축복하여 주시옵소서. 오 할렐루야 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 예수로 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 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 나를 살아나라 마음을 두려우니 마음을 받아 주옵소서. 아버지 앞에 기도가 상달되기를 원합니다. 할렐루야 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 어렵다 발끝까지 예수께 보내주사 흘러들어갈지어다. 뼈속에 살기가 필속에 예수의 내가 흘러들어갈지어다. 살게 될지어다. 오장육과 강건하게 될지어다. 오 할렐루야 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 예수 갈라오 예수 갈라오 라카테 출근대 해 할렐루야 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 이 가정을 축복하여 주옵소서. 아버지가 호주로부터 시작하여서 어린아이에 이르기까지 아버지 주님을 섬기는 귀한 가정 되게 하여 주시고 아버지 오직 주님 오직 순종으로 살아가는 귀한 아버지 믿음의 하나님의 딸이 될 수 있도록 아버지 은혜 베풀어 주시옵소서. 머리부터 발끝까지 주의 소리때 불의 피가 흘러들어갈지어다. 예수 갈라오 라카테 치르그때 할렐루야 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 하나님 주님 앞에 예수 그리스도의 이름으로 올리는 기도마다 하나님 들어주시고 응답하여 주시고 주님의 가장 귀하고 아름다운 방법으로 응답하여 주옵소서. 예수 갈라오 오 할렐루야 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 주님 주신 사명 잘 감당할 수 있도록 하나님 도와주시고 주님 앞에 갔을 때 잘했다 칭찬받는 귀한 딸 되게 주님 도와주시옵소서. 이 새벽에 나왔사오니 새벽에 받을 은혜를 허락하여 주옵소서. 아버지 부지런히 주님을 찾는 자 주님을 만난다 말씀하였사오니 그 말씀 부여잡고 달려갑니다. 하나님 은혜 위에 은혜를 베풀어 주시옵소서. 오 할렐루야 할렐루야 할렐루야
할렐루야. 주님 사랑합니다. 인정합니다. 환영합니다. 아버지 하나님 함께 도와주옵소서. 하늘의 시련한 복으로 땅에 것으로 채워주시고 인도하여 주옵소서. 성령의 불러 임하여 주옵소서. 오 예수로 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 아바바바바바바바바 주루라라라 요라라라라를 디디바바바바바 오 할렐루 할렐루 할렐루야 아바바바바바 루루리디디디 살라사라라라 아버지여 땅은 축복하여 주옵소서. 아보라라라바라바리디 스칼레사라라 오 할렐루야 자손들이 잘되게 주님 도와주시고 믿음의 선진으로서 달려가기를 당연히 달려가고 있사오나 그래도 세임과 새누리를 허락하여 주시옵소서. 장로님의 해물들을 축복하여 주옵소서. 예수께 남세 예수께 남세 할렐루 할렐루 할렐루야 예수로 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 아버지 허리에 아픕니다. 아버지 환도뼈를 아버지 치유하여 주옵소서. 까마르만도 예수의 피로 임하여 주옵소서. 예수로 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 아바바바바바바바 루라라라바라리 스칼레사라라라 예수께 남세 할렐루야 예수께 남세 할렐루야 आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बात सही है, तेरी बंसी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज से रोटी आज जो मत और जिसमें हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज को माफ हमें आसमान का बल्कि बुराई से कुछ पुत्र और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। 아멘 할렐루야. God bless you. God bless